आगे पढ़ते हैं. So let's read ahead. So forensic में we are reading की identification part 2, and we can identify based on fingerprints. And now we'll be reading about poroscopy. तो poroscopy क्या होता है? Poroscopy is the term applied to specialized study of pores, pore structure from the ridges of the finger as means of identification. So hands are studied with microscopic pores formed by mouth of ducts of sub-epidermal. Millimeter of the ridge contains 9 to 18 pores. There are about 550 pores per square centimeter in finger ridges and less than. So, poroscopy क्या होता है? Is the discovered and developed by Edmund Locard in 1912. He observed that, like the ridge characteristics, the pores are also permanent. Pores भी जो होते हैं वो permanent होते हैं and immeasurable, and individually these are useful to establish the identity of individual, and when available ridges do not perform sufficient ridge character. सो इस तरीके से स्वेट पोर होते हैं एज दे अपियर ऑन रिजेस. पोडोग्राफी क्या होता है? फुट प्रिंट का होता है. सो स्किन ऑफ टोज एंड हील्स आर डिस्टिंक्ट एंड परमानेंट एज दोज ऑफ फिंगर्स. Footprint of newborn infant are used in a maternity hospital to prevent exchange of substitution of infant. Records are also kept for Air Force flying personnel. Now, ridgeology. Ridgeology refers to the fiction ridge identification that is associated with all ridges on the volar areas and not just on the fingerprint. Now, एजियोस्कोपी क्या होता है? टर्म कॉइन्ड बाय सलील के चैटर्जी, is the study of characteristic formed by the side of or edge of the papillary ridge as a means of identification. Now, what's forensic podiatry? So, speciality using clinical podiatric knowledge for the purpose of person identification. The technique of forensic podiatry includes identification from podiatry record, human footprint, footwear, and the analysis of gait from captured on the CCTV cameras. The most valuable technique related to the comparison of the foot impression seen inside the shoes. लिप प्रिंट को चीलियोस्कोपी कहते हैं. तो चीलियोस्कोपी, द स्टडी ऑफ लिप प्रिंट इज नोन एज चीलियोस्कोपी. इट इज सेड दैट अ पर्सन्स लिप प्रिंट आर यूनिक एंड कैन बी यूजफुल for personal identification. Currently, lip print identification is not acceptable as evidence in the court of the law. एक्सेप्ट नहीं होता है कोर्ट में, नहीं हम लोग प्रेजेंट कर सकते. सो लिप प्रिंट आर रिवेल्ड एट द पॉइंट ऑफ डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स लिप विथ एन ऑब्जेक्ट एट द सीन ऑफ क्राइम, जैसे कि कटलरी या कॉकरी आइटम. पार्शली इफ अ मील वॉज ईटेड और ऑन द सर्फेस ऑफ विंडो या प्लास्टिक बैग या सिगरेट के एंड में. Suzuki has divided lip print into 5 main types. Type 1 represent groove running vertically over the rip. Type 1 has partial length group of type 1 variety. They do not cover the entire breadth of the lip.
टाइप टू रिप्रेजेंट्स द ब्रांच्ड ग्रुप. ये पूरा एंटायर टाइप वन जो होता है लॉन्ग वर्टिकल ग्रुप्स होता है बट पूरा लिप्स नहीं कवर करता है. टाइप टू जो होता है रिप्रेजेंट ब्रांच्ड ग्रुप्स, इसमें ब्रांच्ड ग्रुप्स होते हैं. टाइप थ्री जो होता है रिप्रेजेंट द इंटरसेक्टेड ग्रूव. टाइप फोर जो होता है रिप्रेजेंट्स द रेटिकुलेट पैटर्न मच लाइक अ वायर का मैश. टाइप फाइव जो होता है रिप्रेजेंट्स ऑल अदर पैटर्न्स. टाइप फोर ये है. टाइप फोर जो है रेटिकुलर ग्रूव्स मैश लाइक पैटर्न है. टाइप थ्री जो था, टाइप थ्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? इंसेक्टेड ग्रूव्स. ग्रूव्स है, इंटरसेक्टेड ग्रूव्स है. टाइप टू वॉज ब्रांचिंग ग्रूव्स, ये ब्रांचेस दे रहे. टाइप वन वॉज शॉर्ट वर्टिकल ग्रूव एंड लॉन्ग वर्टिकल ग्रूव, दो तरीके का होता है. अब टाइप फाइव क्या है? इरेग्युलर पैटर्न है. टाइप फाइव मतलब जो भी all other patterns, they are irregular non classified patterns. So recent advances in identification क्या है? Retina and iris scanning. So eye based biometric is considered the most secure of all the biometrics. Useful such as prisons, government agencies and consists of two form. iris scan करता है और retina को scan. First biometric eye scanning was the retina scanner examine the pattern of retina का जो blood है by casting either natural या infrared light. Extremely accurate process as the retinal pattern are stable over time and unique to individual. However, the equipment for retina scanning is bulky, complex, and costly to be uncomfortable for users. Iris scanning is an iris scan is a high quality photograph taken under iris patterns are complex, containing more. Iris are uniquely and even identical twin and even identical twin exhibit different iris pattern. Iris recognition imaging cameras that are not specialized or expensive. So, facial recognition. Major advantage of facial recognition over other biometric technology is that intrusive होता है. It does not require individual to provide fingerprint or recognition is affected by time. The appearance and shape of face and alteration to face जैसे surgery, accident, shaving. Several methods have been devised. One technique analyzes the bone structure, nose, and cheek. Another technology recognizes a neural networks for hotspots using infrared technology, so-called facial thermogram. So voice recognition. DRK Cloud, hello. So voice recognition differs from other biometric information instead of imaging. Unique set of voice characteristic that are different to its advantage over other biometric is that voice data which can be used in security fraud
prevention and voice voice recognition, uh, verification, text dependent, text prompted, text independent. ठीक है. स्टडी ऑफ लिप का जो इन क्राइम सीन्स चीलोस्कोपी कहते हैं, प्रोमिनेंट longitudinal grooves are there. So discuss and describe identification of dead bodies from the remain hair and fibers. ये कैसे करेंगे? सो एग्जामिनेशन ऑफ हेयर का एग्जामिनेशन को ट्राइकोलॉजी कहा जाता है. कैन प्रोवाइड क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स विथ बर्निंग हेयर इज वर्चुअली इनडिस्ट्रक्टेबल. कर सकते हेयर को, वरना हेयर जो होता है ना इनडिस्ट्रक्टेबल होता है. इट रिमेन्स आइडेंटिफाइबल advanced state of decomposition or attached to the weapon of offense. When a sample of hair is submitted for examination, the following exam questions need to be answered. Medical legal question क्या क्या है जिसको आंसर करना पड़ता है. Some other fiber. So hair consists of bulb, होता है और टिप होता है हेयर में. रूट इज द पोर्शन ऑफ हेयर एट बेस नोन एज बल्ब एम्बेडेड इनसाइड द हेयर फॉलिकल. शाफ्ट जो above the skin, ठीक है, at the free end as tip. Now hair can be divided into three zones. Cuticle outermost layer होता है, consists of thin non pigmented microscopic. कॉर्टेक्स जो होता है मिडिल लेयर होता है हेयर, अरेंज्ड elongated cell. Within these cells are fibrils on granules of pigment. So pigment जो होता है वो कॉर्टेक्स में होता है, क्यूटिकल में नहीं होता है. इट हैज केराटिन for charring and acrid odor when the hair is burned. नाउ मेड्यूला क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर होता है बाल का जो कंपोज्ड होता है सेल से. These three zones are also seen in tip is usually non-medulated. Fibers can be classified into two groups, natural and artificial. So this is part of hair. This is epidermis. This is the bulb of hair. This is cuticle. ये cortex होता है, ये बाहर वाला है. This is the medulla, बीच वाला. Now this is cuticle scale. I have seen. Natural fiber are subdivided into three classes. Animal, जिसमें सिल्क वुल और हेयर आ जाएगा, कॉटन जूट कॉयर आ जाएगा, मिनरल जैसे एस्बेस्टोस आएगा. ये तीनों नेचुरल फाइबर्स होते हैं. जो होते हैं वो सब डिवाइडेड इनटू सिंथेटिक पॉलीमर और नेचुरल होते हैं. ऑल एनिमल फाइबर्स एक्सेप्ट सिल्क कैन बी कंसिडर्ड एज. Natural fiber have distinctive appearance that can be determined in microscopy. Synthetic easily be identified with the microscopy can be subjected to spectrophotometry. So if here is it human, पूछना है. सो डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल हेयर जो है वो गिवन है.
फाइंड एज द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ मेड्यूला, मेड्यूला मतलब सबसे अंदर वाला पार्ट ऑफ द होल हेयर, मतलब कि दिस बाय पूरा दिस। देख लेते हैं एनिमल और ह्यूमन हेयर में डिफरेंस क्या होता है। किसके नेटवर्क में इशू हो रहा है, मेरे या आपके में? सुपरनोवा क्या प्रॉब्लम क्या हो? मेरे नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम? इज इट नॉट ऑडिबल? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके, यू आर नॉट गेटिंग माई वॉइस प्रॉपरली। नाउ इज इट बेटर नाउ? Is it better now? So, what is the problem? I think it is better in my device. So we are differentiating. I think there must be some glitch from your side because इस जब देखा ना तो the sound is perfectly all right. तो हम लोग ह्यूमन का हेयर है या फिर ये एनिमल का हेयर है, ये कैसे डिफरेंशिएट? ह्यूमन का हेयर होता है वो डेलिकेट होता है, बहुत फाइन होता है, बहुत पतला होता है, मोटा थिक होता है, कोर्स होता है। देन कलर जो होता है ग्रे रेडिश या रेडिश ब्राउन कलर हो सकता है। बट एनिमल का जो हेयर का कलर होता है could have blended up banded appearance। ह्यूमन के हेयर का कॉर्टेक्स इज दिस पार्ट इज कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स होता है ह्यूमन का वो striated होता है 4 to 10 times as broad as medulla, ब्रॉडर होता है। बट एनिमल का हेयर में ये जो रियरली ट्वाइस एज ब्रॉड एज मेड्यूला। अब ये जो मेड्यूला होता है, ये जो बीच वाला पोर्शन ह्यूमन में नैरो होता है। सो ह्यूमन में ये जो मेड्यूला होता है दैट्स क्वाइट नैरो, मे बी फ्रैगमेंटेड और इवन एब्सेंट। एब्सेंट भी हो सकता है, बहुत पतला होता है मेड्यूला ह्यूमंस में। पर जो एयर मेडुला बहुत ब्रॉड होता है, कंटिन्यूअस होता है और हमेशा प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद मेड्युलरी इंडेक्स जो होता है हमारा वो <1/3 होता है। बट एनिमल हेयर में शाफ्ट जो होता है, शाफ्ट मतलब ये जो हाइट है बाल का उसका डायमीटर माइक्रोमीटर, शाफ्ट का डायामीटर है। बट एनिमल में 25 माइक्रोमीटर तक जा सकता है। रूट जो होता है हमारा, दिस इज़ द रूट ऑफ द हेयर। तो रूट जो होता है वो बल्ब या फिर रिबन शेप का होता है, बट एनिमल में ब्रश लाइक होता है। देन वी हैव टिप। तो कट और फ्रेड स्कैल्प हेयर होता है हमारे में। टिप जो होते हैं वो कट होते हैं या फिर फ्रेड स्कैल्प हेयर होते हैं। बट एनिमल में टेपर्ड टिप होते हैं। देन क्यूटिकल स्केल्स जो होते हैं, ये रहा क्यूटिकल स्केल्स, ये ह्यूमन में शॉर्ट ब्रॉड थिन और इरेगुलर एन्युलर होता है। बट एनिमल्स में लार्ज एंड हैव स्टेप लाइक वेवी प्रोजेक्शंस। देन हम लोग पिगमेंट ग्रैन्यूल्स देख लेंगे तो हम लोगों में तो कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बट एनिमल्स में मोस्टली क्लम्प्ड होता है नियर द मेड्यूला।
Now we have uh, precipitin test with intact root. So specific होता है human के लिए precipitin test and specific for animals. अलग अलग होता है. So the तीसरा question we'll ask is what can be racial profile of the person. Person का racial profile क्या हो सकता है? Important differences are given in this. These features become somewhat less useful for identifying people of mixed ancestry. So features क्या होता है? Cotton जो होता है, माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हम लोग देख रहे हैं. सो कॉटन जो होता है वो फ्लैटेंड एंड ट्विस्टेड ट्यूब्स कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग ट्यूबुलर सेल विथ थिकेंड एज एंड ब्लंट पॉइंटेड एंड्स होते हैं. सिल्क जो होता है कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग क्लियर थ्रेड विदाउट एनी सेल्स. दे हैव स्मूथ surface and are finely striated. Wool जो होता है being an animal hair, it shows an outer layer of flattened cell and overlying margins. Interior is composed of fibrous tissue but sometimes medulla is present. ये रहा आपका ह्यूमन हेयर, दिस इज एनिमल हेयर. इसमें मेड्यूला बहुत थिक होता है. अच्छा, आ नहीं रहा है क्या? इज देयर सम प्रॉब्लम इन नेटवर्क? सुबह हुआ. ओके, हाउ विल आई नो कि आ रहा है कि नहीं? सो चलो आगे देखते हैं. सो फीचर्स देख लेते हैं कॉकेशियन मंगोलियन नेग्रोस का. बाल का कलर क्या होता है? कॉकेशियंस का होता है. हम लोग अपने आप को कॉकेशियंस ले सकते हैं या फिर वो बाहर वाले लोग होते हैं ना, वो कॉकेशियन हिंदी होते हैं. सो कॉकेशियंस जो होते हैं उनका लाइट ब्राउन हेयर होता है. मंगोलियंस का ब्लैक या डार्क ब्राउन होता है एंड नीग्रोस का ब्लैक या डार्क ब्राउन होता है. देन कंसिस्टेंसी फाइन टू मीडियम होता है कॉकेशियन का. कोर्स होता है मंगोलियन का. शॉर्ट कर्ली एंड फाइनेस्ट होता है नीग्रोस का. शेप देखेंगे तो ओवल होता है कॉकेशियन का, राउंड होता है मंगोलियंस का, फ्लैट होता है नीग्रोस का. देन शाफ्ट का डायमीटर देखेंगे स्ट्रेट वेरिएशन है, कांस्टेंट डायमीटर वाइल्ड वेरिएशन. पिगमेंटेशन यूनिफॉर्म होता है. कोर्स ग्रैन्यूल्स होता है, इरेगुलर होता है. क्यूटिकल्स देखेंगे थिन, थिक एंड मीडियम. मेड्यूला देखेंगे फ्रैगमेंटेड या एब्सेंट मेड्यूला होता है, अनब्रोकन, फ्रैगमेंटेड या एब्सेंट. Now let's move ahead. Guys, is the network there or guys, is the network there or not? So आगे पढ़ते हैं. From what part of the network is good, right? So what part of the body has the hair originated? सो स्कैल्प हेयर जो होता है वो ओरिजिनेट होता है लॉन्ग शाफ्ट टेपर्ड फ्रॉम रूट टू द टिप, स्प्लिट एंड होता है एंड सर्कुलर ऑन क्रॉस सेक्शन होता है. देन बियर्ड और मुस्टैच होता है वो थिकर होता है, स्ट्रेट होता है, ब्लंट टिप होता है, ट्रायंगुलर ऑन क्रॉस सेक्शन होता है. एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर होता है स्टाउट, शॉर्ट, lack of uniformity and curls with frayed on split ends. आईब्रो और आईलैश और नॉस्ट्रल हेयर होता है वो शॉर्ट होता है एंड स्टिफ होता है, थिक होता है, टेपरिंग एबडेंटली बट ट्रायंगुलर ऑन क्रॉस सेक्शन. इधर देख सकते हैं आईब्रो का ट्रायंगुलर होता है
ऐसे स्कैल्प का ऐसा गोल सा होता है, कॉकेशियंस का ऐसा होगा, नीग्रोस का ऐसा होगा. देन वी कैन सी कि बॉडी हेयर जो होता है सॉफ्ट फाइन एंड फ्लेक्सिबल, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ मेड्यूला, माइल्डर पिगमेंटेड एंड नैरो टिप होता है. ना इज दिस मेल या फीमेल हेयर, ये कैसे आंसर करेंगे? सो बियर्ड और मुस्टैच जो होता है आर स्पेसिफिक फॉर मेल्स. मेल हेयर इज यूजुअली थिकर, कोर्सर एंड डार्कर एज कंपेयर टू फीमेल्स. बार बॉडी जो होता है कैन बी डिटेक्टेड इन हेयर फॉलिकल्स in 20 to 80% of the female and only about 0 to 4% of the males. Sexing can be done if root uh, sheath is present using DNA analysis. फिर उसके बाद क्या है, वॉट कैन बी द एज ऑफ द पर्सन. एज कैसे बताएंगे? सो वेदर द हेयर इज दैट ऑफ एन इन्फेंट या फिर एडल्ट कैन सेड. लैग्यूनो हेयर जो होता है वो न्यूबॉर्न का होता है, वो फाइन होता है, डाउनी होता है, सॉफ्ट, नॉन पिगमेंटेड, नॉट मेड्यूलरी, क्यूटिकुलर स्केल्स हैव स्मूथ एजेस. अडल्ट हेयर जो होता है वो कोर्स होता है, पिगमेंटेड होता है, और मेड्यूलरी हैविंग अ कॉम्प्लेक्स सर्कुलर पैटर्न. और ग्रे हेयर जो होता है आर एपरेंट आफ्टर द एज ऑफ 40 एंड आर डिवॉइड ऑफ एनी पिगमेंट्स. कोई पिगमेंट ही नहीं होता है ग्रे हेयर में. सो हैज़ द हेयर बीइंग अल्टर्ड बाय डाइंग या ब्लीचिंग या डिजीज़. सो ब्लीचिंग या फिर कलर हेयर आर ड्राई, ड्राई हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, लस्टर लेस हो जाता है और रफ हो जाता है, इसलिए ब्लीच नहीं करवाना चाहिए. abrupt color change to a very light color indicates bleaching. Color in cuticle indicates dyeing. So, microscopical examination with incidental fluorescence illuminoscopy may show whether hair is dyed or not. कर्ली अपीयरेंस जो होता है हेयर का, curly appearance accompanied by constriction in the shaft is indicative of permanent waving. नाउ हेयर कलर जो होता है वो लाइटर होता है डिजीज़ में, जैसे क्वाजियोर्कर में, माल नरिशमेंट में, सर्टेन वाइटामिन डेफिशिएंसीज में. अब टनलिंग ऑफ द हेयर होता है बाय फंगल हाइफे कैन प्रोड्यूस डिस्टिंक्टिव ट्रांसवर्स लाइन्स सीन इन हेयर एक्सपोज टू फंजाई एंड अकर इन बरीड बॉडीज. Now, is the hair identical with hair of the victim या फिर of the suspect? Blood group ABO can be determined from single hair bulb. Microscopic examination of the scalp hair may provide information of pediatric conditions जैसे कि Menkes disease, Netherton's syndrome और Moni-Thlick's. In some structures is present. If some root structure is present, standard DNA profiling भी कर सकते हैं. Even in the shaft, even if the shaft is there, mitochondria DNA testing कर सकते हैं. Did the hair fall naturally or was it forcibly removed? So the bulb of naturally fallen hair is distorted. bulb जो होता है वो distort हो जाता है, atrophy हो जाता है, and the hair sheath जो होता है वो absent होता है. If forcibly plucked hair, the hair sheath जो होता है वो rupture हो जाता है, bulb swollen हो जाता है और larger हो जाता है और irregular हो जाता है. If the root is not present, रूट अगर प्रेजेंट नहीं है, एंड इवन ब्रेक विथ रेगुलर एजेस इंडिकेट्स दैट इट वॉज कट ऑफ, एंड इरेगुलर ब्रेक इंडिकेट्स दैट द हेयर वॉज ब्रोकन ऑफ. सो what is the cause of injury? इंजरी का cause क्या है? In uncut hair, the tip is pointed and non-modulated. Sharp weapon produces a clean uniform cut surface. और blunt force जो होता है injury result in flattering और splitting of the hair shaft. ये देखो, ये जो है healthy hair bulb है, प्लग किया हुआ है, ये दिखा रहा है healthy hair bulb प्लग किया हुआ है. और रूट ऑफ नेचुरली फॉलन हेयर, जो नेचुरली फॉल करता है ना उसका रूट इस तरीके से होता है, और जो खींच के
प्लग करके हम लोग तोड़ते, वैसे इस तरीके का होता है. Now, what is the cause of superimposition? नहीं, what is the cause of injury? So, in uncut hair, the tip is pointed, medullary होता है, sharp weapon में clean uniform cut surface होता है, blunt force में flattened यही होता है. ये देख सकते हैं अनकट हेयर है और रिसेंटली कट हेयर है. मेड्यूला इसका सीधा होता है रिसेंटली कट का, और अनकट हेयर का इस तरीके से होता है. Now, postmortem root banding may be seen in decomposed bodies wherein an opaque band of about 0.5 millimeter above the root bulb can be observed with transmitted light microscopy. Now I'm gonna take a rest because मुझे तैयार होके कॉलेज भी जाना है. Thank you guys. Bye.